Assalamu alaikum students, today is Tuesday 14th July 2020 and before starting today's English lesson, let's recall what was the homework yesterday. Alright, yesterday we have learnt about direct speech and reported speech, and related to that topic I gave you to practice on workbook page number 15 C and D as homework. So let's see if you have done that correctly. They said we can do it. In direct speech we report the words of speaker within inverted commas. आप देख रहे हैं हम speaker के words को within inverted commas represent करते हैं. So let's see what is the reported speech to this one's statement. They said they could do it. D. What can I do? She asked. She asked what she could do. So this was about the homework, yesterday's homework. Alright, and yesterday we also did some written work. हमने written work किया था reported speech से related. We changed direct speech into reported speech. I'm sure आप सब ने ये अपना class work complete कर लिया होगा, and after completing that आपने index भी अपना fill कर लिया होगा, because ये जो notes हैं हमारे these are uploaded in Smart School app. वहाँ पे notes का जो folder है after watching the video lesson of relevant subjects वहाँ पे ये upload किया हुआ है, और I'm sure आपने वहाँ से इसको complete कर लिया होगा. So this was the recap of yesterday's working. Alright, now let's move towards topic. Today we are going to practice and we are going to reinforce the alphabetical order. What is alphabetical order? Let's recall that. हमने previous lessons में भी इसको read किया था, study किया था, but today we are going to reinforce that. Alright, children, there are 26 alphabets in English. English में यहाँ पे 26 alphabets हैं, and you see that A, B, C, D, E, F and so on till Z. आप देख रहे हैं इन सब अल्फ़ाबेट्स का एक ऑर्डर है. क्या ऐसा है कि ए के बाद पी आ रहा है, ए के बाद आर आ रहा है? नो, बिकॉज आफ्टर ए देयर इज़ बी, देन सी, डी. इनका एक ऑर्डर है. दीज अल्फ़ाबेट्स कैरी अ सर्टन स्पेसिफिक ऑर्डर. इनकी एक तरतीब है, एक अरेंजमेंट है, और वो इसी तरतीब के साथ ही अरेंज किए जाते हैं. सो दिस ऑर्डर इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. इस ऑर्डर को ए बी सी ऑर्डर भी कहा जाता है. सब अल्फ़ाबेट्स इसी ऑर्डर से अरेंज किए होते हैं, और इस ऑर्डर को हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ये ऑर्डर डिक्शनरी स्किल प्रैक्टिस करते हुए जो है ये यूज़ होता है, बिकॉज डिक्शनरी में जितने वर्ड्स हैं सब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किए हुए होते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम रिटन वर्क रिलेटेड टू दिस वन. ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी सीज़ थे, अल्फ़ाबेटिक्स थे. नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जाम्पल. For example, apple, butterfly, cup, dog, fish, goat, house, ice cream. You see the first letter of these words? Yes, A, B, C. These are written with red marker. A, B, C, D, F, G, H, I, E is missing here. Apple, butterfly, cup, dog, fish, goat, house, ice. All of these words are arranged alphabetically. ये सब वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किए हुए हैं. इट मीन्स के जो ए बी सी ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग अरेंज किए हुए हैं. एप्पल के बाद यू कांट पुट गोट, बिकॉज यहाँ पे ए के बाद वो वर्ड आएगा जो बी से बिगिन होगा, एंड आफ्टर बी सी, डी, एफ, जी, एच, आई. ऑलराइट, बट अगर फर्स्ट लेटर के साथ सेकेंड लेटर भी सेम है, देन वी विल सी द ऑर्डर ऑफ सेकेंड अल्फ़ाबेट. फॉर एग्जाम्पल, actor, aunt, apple, artist. All of these words are beginning with letter A. अगर सब वर्ड्स सेम लेटर से बिगिन हो रहे हैं तो फिर हम फर्स्ट लेटर की बजाय सेकेंड लेटर का ऑर्डर चेक करते हैं. C, N, P, R. So it means that we can't put aunt before actor. हम aunt से पहले actor को राइट करेंगे, aunt को नहीं राइट करेंगे. Why? Because in A, B, C comes first and N comes later. आप देख रहे हैं A, B, C में C पहले आता है और N afterwards. So this is what we call alphabetical order. और अगर same second letter same है, then we will see the sequence of third letter. For example, clown, clean, claw, club. These are the words which have same two beginning letters, CL, CL, CL. So here we will check the sequence of third letter, A, E, O, U. We can't put
club first and claw on the last. Why? Because we have arranged these words alphabetically. और ABC order में एक पहले आता है, then E, O and U. So this is what all about alphabetical order. Now I would like you to take out your textbook. We are going to attempt this one question. Put the following in alphabetical order. हमारे पास यहाँ पे कुछ words हैं और हमने इन words को अपनी notebook में alphabetically arrange करना है. And the names above all are surnames. ये जितने names हैं ये surnames हैं. What is a surname? Yes, a surname is something that identifies somebody as belonging to a particular family. Surname एक ऐसा word है किसी भी इंडिविजुअल का जो आइडेंटिफाई करता है, जो उसकी पहचान होता है कि वो एक सर्टन और एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारे फैमिली नेम हैं, सर नेम हैं, लाइक अराई, राना, शेख, कश्मीरी, बट, खान. So these all are surnames. So surname is is something that identifies somebody that he belongs to a particular family. So these are the surnames, and we are going to arrange these surnames alphabetically. So please take out your notebook. We will attempt this in our notebook. All right. So let's begin. First of all, let's prepare the page. Draw a margin line. Make sure you draw a very straight margin line. Write with sharp pencil tip. Your handwriting should be very neat. Top left corner, the date will be mentioned, Tuesday, 14th July 2020. Classwork, unit number 4, storyteller. Topic, alphabetical order. Put the following in alphabetical order. This is the statement, and we are going to write all of the surnames alphabetically. So यहाँ पे हमने alphabetically ने write करना है. As I told you कि जब first letter same होगा we will see the second, but if the second is the same we will come to the third letter. So first Addison. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब jumbled हैं. Dickens, Bond, Yeats, Shakespeare, Dryden, Keats, Shelley, Blyton, Sterne. So हम यहाँ पे इनको arrange कर रहे हैं. Addison, Alcott, Blyton, Bond, Dickens, Dryden, Gardner, Keats, Ludlum, Quincy, Shakespeare, Shelley, Sterne, Wodehouse, Yeats, Xenophon. So these are the surnames which are arranged alphabetically. Let's give them number. These are total 16. Alright, so these are total 16 surnames और हमने इन सब surnames को alphabetically arrange कर लिया, right? So that's how you will arrange them. You see A, all the surnames begin with letter A will be written first. हम सबसे पहले उन letters को write करेंगे जो A से begin हो रहे हैं, then B. Let me highlight this for you. First of all A, you see A, then B, B, D, D, G, K, L, Q, S, 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 W, Y, X. And then first two surnames, Addison, Alcott, both are same, but then we have seen the second one. Second one is Addison, D. D comes first, you see, D and L. Which alphabet come first in the ABC? D, of course. So that's why Addison is written before Alcott. Then B, Blyton and Bond. L. L comes first as compared to O. Then D, D-I and then D-R. Alright. So here, sh. See 11 and 12. Sh, sh. S-H. Second is same. So then we are going to see the third letter, the sequence of, yes, A. A comes first. A comes before E, so that's why Shakespeare is written earlier and Shelley later. And then Sterne. So that's how you will arrange all of the letters alphabetically. And after completing this, you will write down the index, 14th July 2020, alphabetical order, and
these notes are uploaded in the Smart School app. After watching the video, you can download the notes from there and you will complete the work in your notebook. So this is all about alphabetical order. It's time to look at the diary. Alright, today's diary is practice alphabetical order by using dictionary. आप डिक्शनरी सर्च करेंगे और डिक्शनरी सर्च करते हुए आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स को प्रैक्टिस करेंगे. ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये डिक्शनरी है, लिटिल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है मेरे पास. आपके घर में जो भी डिक्शनरी अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो यहाँ पे डिक्शनरी में आप वर्ड सर्च करेंगे. ये सब जो भी हमने पढ़े हैं देखें, ये सब हमारे पास अमेरिकन और इंग्लिश ऑथर्स राइटर्स हैं, उनके नेम हैं. आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल सर नेम, सो ABCDEFGHPQRS. We are going to search the meaning of surname. Surname, as I told you, this is the family name. You see SURNP. Here is it. Here we found. You see surname. Surname is a noun, an inherited name used by all the members of a family. So it means that surname is something that identifies somebody, that it belongs to a particular family. Family name, surname जो है वो किसी भी फैमिली का पर्टिकुलर होता है और वो उसकी आइडेंटिटी होता है. जैसे मैंने आपको बताया, हमारी सराउंडिंग में भी काफ़ी सारे नेम्स हैं, लाइक खान, शेख, राना, मुग़ल, खोखर. So all of these are the surnames. So thank you very much. Look after yourself. Stay home. Stay safe.